प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं, जिस पर चांद सितारे वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं, जिस पर
चांद सितारे वो है आसमान, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। Thank you for the opportunity. Okay, so that was a very lovely song, and the gist of the summary was that the mother has treated, the earth has treated us like a mother, and the sky has given us the fatherly protection. So we are ensconced between these two great things, the earth as well as the sky above us. Thank you, Pratiksha ji, for this lovely video. I would like you to say a few words regarding your selection of this video, and you would like to address this people with a few words. Pratiksha ji, unmute. Om Shanti Bhaiji. Yeah, Om Shanti. Om Shanti. As I was told to share some songs regarding this today's event, World Earth Day, so like Baba touched me, like I should share this song, this beautiful song, which describes our beautiful Mother Earth. So this is the Baba's touching, and I have shared this. I am glad that you all liked it. Thank you. Okay. So thank you for sharing that. And currently I have connected my system from Muzaffarpur. We have the headquarters of the Brahmakumaris North Bihar zone over here. And as my screen is saying, Rajyamni B.K. Rani Didi ji, she has been keeping a bit comfortable life because of her age. And I have requested her to join later for her blessings. And if you can stay with this program, you will also get to hear us. So before I go ahead, I would like to introduce the speakers over here. So myself, B.K. Sanjay Bhai, and I have been associated with the Bihar government Urban Development Department, and I have been working with the Patna Municipal Corporation. So I have some idea of solid waste management, and I have been associated with the Urban Development Department for over 10 years now. At the present moment, I am working as a faculty with Bihar State Disaster Management Authority and BPARD, and I have been actively involved with the activities of the Brahmakumaris organization. So that's about me. And here we have, I will read out from the list which is on the screen. We have Dr. Chandreshwar Khanji. He has been Senior AGM of Tata Steel, AGM HR and training. And he has been, for the last 2 years, we got associated during lockdown. And he has been from Jamshedpur. He has been actively participating and giving us enlightenment on so many concurrent topics. So we will get to hear him as one of the special panelists. We have Dr. S.K. Samantaji, Sujay Kumar Samantaji. He is Associate Professor at Indian Institute of Technology, Patna, and he is the founding HOD of Engineering and Biochemical Engineering Department at IIT Patna. So he will also be delving on this topic, and he is very the fittest person because he has also been associated with pollution remedy projects. We have it's our pleasure to have today Dr. Anant Kumar ji. He has a surprise, guest to today's program. He had called himself for some other work, but I have asked him to be participating in this. And Dr. Anant Kumar is a Joint Director in the Science and Technology Department of Government of Bihar, apart from being Director of Taramandal, the planetarium at Patna.
And apart from that, he is also a college principal of Vaishali Engineering College. He is having multiple responsibilities. At the same time, he has kept himself busy with lots of improvement things, especially he being a technocrat, he is very much interested in working on the psyche of students, and he gives them special coaching, and today also is requested to work on the betterment of the psyche of the students, because students constitute a very important part of the population. So that's very nice to have him here today. And we have Sister Richa Priyaji. Welcome, Sister Richa. I will give you some time to speak where you can introduce yourself. But can you introduce yourself for a while and unmute, because I don't have your introduction. Sister Richa. I'm a research scholar from Patna University, and I have a colleague here, and that is Shruti Parmar. Okay, fine. That's great. So you have two research scholars. So she has mentioned about Shruti Parmar. She is a PhD scholar with the Patna University, and she's doing some experiment and some projects related to the environment and its effect on the mind. So she will be also delving on the topic. We also have Brother Suresh Chandra Sinha. Suresh Chandra Sinha is based at Ranchi, and we met at Durgapur CMERI, Center for Mechanical Engineering and Research Institute, where he was delivering some training on solid waste and liquid waste management. So he's a great trainer, and he keeps visiting the country on the issue of how to manage the waste on the planet. So we are great to have Suresh Chandra Sinha ji also in this gathering. And at the last but not the least, we have Brother Tilak Raj Gandhi. Tilak Raj Gandhi is a famous hotelier of Patna, because his enterprise has been there in the Pal Hotel group in Patna, and people from Patna would very proudly remember the Pal Hotel in Patna. But that's not the only thing. He is also one of the founder members of Save International in Patna, and he had especially asked me to send the link so that he can listen and also participate. And at the end of it, there is a new edition called, we have brought a participant from Mount Abu, Brothers Chandresh Bhadra. He is a wonderful project consultant, and he's working on the concept of Jal Jan Abhiyan. Like in Bihar, we have got Haryali mission and water mission, and similarly on that pattern, he has a project in which he is associating the villages around Mount Abu, adopting them, and trying to bring all the goodies in that village so that it becomes sustainable. So as you can see, we have got a great gathering of people over here, and so it will be very enlightening to listen to all of them. So before I go ahead with one of the speakers, I will share the screen with today's topic. So just we are celebrating the Earth Day, and we are launching that Earth Day program, in which the basic concepts we want to share with you is that how to preserve, protect, and the planet. Just trying to open this. So I'll just take 5 minutes to introduce this subject. So Brahmakumaris is an organization which consists of 20 wings, catering to the different needs of the planet. One of the wings with the Brahmakumaris is the scientists, engineers, and the architects wing. And today we are launching a national campaign on One Earth. And it's a part of our G20 association, which is saying One Earth, One Family, One Future. So the objective of this arranging such program is to generate awareness about the impact of thought on environment, because people are mostly saying that the environment is a concern of all the big nations,
but we are very much very clear on the subject that individual awareness and individual involvement is a very much important part of sustainable environment. So we want to generate awareness on that, and awareness to protect the Mother Earth, to focus on the role of lifestyle on sustainable living, and to enrich our future generation, especially the students, about preserving our planet, to create understanding about the impact of food on the mother nature. Because आजकल जो है बहुत सारे जो diseases हैं वो psychosomatic diseases हैं, people are falling sick, especially after the havoc, the pandemic. We are seeing a spate of heart attacks, and the earth is really in a spate of shock. So somewhere our food is affecting our mother nature and also the biological nature of our body. And to understand the root cause of external pollution. Root cause is not just consumption, just not the factories and everything, but it could be because of too much of consumerism. And we need to check the pattern and to understand the different factors that are impacting the ecosystem. And let us reflect how the pandemic has impacted. I mean, like all of you have this experience during the pandemic. We had these pictures of the Himalayas being seen from Patna. Himalayas, the image of Himalayas being seen from Muzaffarpur, which is not available right now. So while the pandemic was affected our psyche, because of the less activity of the human beings, we could see the nature in its beautiful form. So sir, are you sharing your screen? I am. Are you sharing your screen? I am sharing the screen. Is it not visible? It's not visible, sir. It's not visible. Live. No, it's my screen says that there is a tab which is saying stop sharing. So I think it's not sharing. Okay, just hold. Okay, new share. Just hold. New share. Is it visible now? Yes, sir. Now it's visible. Okay, thank you. Thank you. Thank you for reminding. Thank you for interrupting also, because it was important. So just today's session is not only based on the sharing of facts and figures, but rather reflection. And I would request all of you to deeply inhale the air, hold it for 10 seconds, close your eyes and exhale just for a moment. Thank you. So now we go into the statistics of these 10 seconds. Do all of us know that in the last 10 seconds, 3,716 tons of fuels were consumed, out of which 2,000 tons of carbon was added to the atmosphere. In the last 10 seconds, 4 acres of forest had been destroyed, and the net forest loss per day is 20,000 hectares, means 73 lakh hectares per year, which is equivalent to 10 basketball courts. In the last 10 seconds, 190 tons of toxic or hazardous waste were added to the world. So how much, just imagine how much harm is happening to the whole. So if you take the global scenario, we are headed for disasters, and these disasters are in the form of earthquake, floods, tsunami, droughts, famine, cyclones. Man-made disasters include industrial accidents, war, riots, terror attacks, and wars fought by men cause more suffering than by all the natural disasters combined. So this is a revelation of its sort, that humans are more responsible than the natural disasters in annihilation of this mankind. And we are all aware of the greenhouse gases, and the world has become like a bathtub where we are accumulating all the greenhouse gases.
due to your misdoings, and the output is going inside the water and the soil. So there are innumerable taps that pour all our sorts of substances into this bathtub from activity on our planet, with a large contribution of human-inspired activities. So human-inspired activities are primarily responsible. The only practical drain is the process of photosynthesis, which requires enough chlorophyll in sufficient plants and trees to do the job. If the input from the taps is less than the availability of the green nature to do this work, we will continue to have relatively clean air. If it is more, we are in serious trouble. So it's time to reflect. It can be design system that diminish the toxic input into the atmospheric bath, or can we help the trees and plants to do their work better? Can we change the way we think and act so that we can guarantee the future of our planet and ourselves? So we will quote some of the leaders of this country, which says, one of them is our great Mahatma Gandhi, who says that nature has given enough for everybody's need, but not for everybody's need, but not for everybody's greed. It's a famous quote from him. Also, Albert Einstein, who says, no problem can be solved from the same consciousness that created it. So the whole problem is that we are staying in body consciousness. We consider ourselves to be a body. We are not aware of the consciousness inside us. So we have to shift perhaps the consciousness from the body to the soul, which is actually our mental powers. So it's a very famous finding by Masaru Emoto, amazing experiment on water. Everybody is aware. He was a graduate of Yokohama Municipal University, and he has given this finding that mind does affect the matter. And that is the famous crystal experiment done by him, in which the positivity is reflected through the wonderful crystal formation. And if you have a thought which is full of love, you get a lovely crystal formation. And if you have giving thoughts which are considered with full of hate, then you have bad crystal formation. So this is, you see this Adolf Hitler. If you imagine Adolf Hitler, you will get this type of water formation in the crystal. If you think of Mother Teresa, you will get better and beautiful water crystal formation. So the Brahmakumaris University, we are working on this. We are also a member of United Nations Environment Program. We have been participating in COP program, and we have been working on transforming the psyche of human beings from being destructive to being constructive, and creating less waste on planet. So water is 70% of the earth, and similarly our body is also 70% made of water. So we have this wonderful experiment called Shashwat Yogi Kheti. One of the brothers who will join at 8 p.m. is a member of the Shashwat Yogi Kheti and our Gram Vikas team. He will be a better person to speak on that. I will move for now. So I will just end my presentation with saying that watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. And watch your habits, they become character. And watch your character, they become your destiny. So the earth is headed towards, if it is headed towards a destruction, if its destiny is bad, then somewhere along the backward integration, if you go, then there is the role of these thoughts. So this is the gist of my presentation, and I would like more experts to come over and take up this with their presentation and enlighten us. And lastly, I would like to say that each thought is like a seed. Mind your mind, because mind matters. So thank you very much for listening to me. And I would now ask the other people to come up with their presentation. We have Professor Samanta, Professor Dr. Samanta ji. He's an associate professor at IIT Patna. So, sir, can you go ahead with your presentation and enlighten all of us? Hello. Sure, sir. Sure.
Is my screen visible, sir? Just hold. Visible, right? Okay. I have shifted myself. Others, please respond if the screen is visible to you. Is my screen visible? Yeah, I yeah. think Richa Priya is active. Can you just confirm me? Is my screen visible? Yes, it is. Okay, okay. Thank you so much. So first of all, I would like to thank Sanjay ji and your association for giving me this wonderful opportunity. Although personally, I'm not a very deep level spiritual person, but somewhere I connect with this topic. So I thought to take this seriously, although my content and my research is primarily with wastewater treatment, but based on this limited time, I have tried to figure out at least few points so that it adds value to this discussion today. So I'll start with a different context. First of all of us know that action gives more importance than only just discussion. So discussion is very important because it initiates, but action is more important. So that's why and many times a goal is very important, and goal with a date is very important because that is a differentiation between basically dream and goal. So our United Nations has given us such about 17 goals, sustainable development goals, and incidentally all of them are directly related with this protection of earth. It's all the beauties is in environment and all the requirement which is important for humanity as well as all other animals and planets on this planet earth. So that's why I have shared those that picture of sustainable development goals, and I've also acknowledged here this Sorry today's for theme. interruption, but your PowerPoint presentation is still not visible, but the main page is visible. You need Sorry, to click it once more to open it. is my screen is shared? Yes, No. sir, your screen is shared, but the PowerPoint presentation is still not visible to us. Is it okay? I have shared from there only. Let's see. Is it shared now? Yes, sir, it is visible. Okay, okay, thank Yes, you. wonderful. Thank you. So I'll take from a different angle, and let me take this interesting example to understand the challenge. For example, the people who are in state like Bihar, West Bengal, eastern part of this country, most of are very much habituated with this particular challenge. I have taken the case study of road accident, and I'll try to link with our present requirement. For example, all the adults of this part of this country, we are very much aware what are the major reasons of road accidents. Okay, for example, if you are driving a car, if you are driving a two-wheeler, three-wheeler, you know what are the reasons. Okay, and if you go by statistics, the major reasons are drink and drive, high speed or overspeeding, and one of them biggest is mobile or electronic gadgets usage. And sometimes if you do not maintain your vehicle, like mechanical failures, and very rarely sometimes some occasional accidents like some cow or a pig or cat or dogs or any other things can come across quickly. So those are occasional incidents because of which you can have accidents. But interestingly, many of us do not follow these 4 to 5 important habits while we drive. And we see that there is a massive number of accidents every year which is happening. And we also do not obey the traffic rules. We believe that everybody else will follow, but we ourselves will not follow. So this kind of concept, I have given a name, it is called biased optimism.
This is very interesting when you travel with a flight or in a train. This kind of optimism is very nice. Means you expect that your the train driver or pilot will take care of you and he'll not make any accident. That is fine. But when you are driving, you are supposed to follow all these things. But instead of doing that, majority of us, what do? We are victim of not following any one of them, or sometimes two of them or three of them. And we expect that rest of the community will follow, but will not follow. So this is called biased optimism, because we very much know that drink and drive, high speed, usage of electronic gadgets or mobile phones, this can cause accidents, but we do not follow that. Majority, more than 75 to 80% of the community do not do that. So with this example, I want to catch your attention to our actual problem. That is basically, first we have to correct ourselves as human being, because from there all these problems are connected. Right. So even if we address 100 times, I believe that until we catch that attention that it is very important, we catch that attention that if 25% of accidents are happening because of mobile usage, you have to stop using mobile. You cannot stop accidents. Similarly, first we have to catch that character correction. And that's why first we have to start ourselves. We have to introspect what happened 100 years back. We have to go 100 years back, and we have to see that in this planet Earth, everything was in an ecosystem. Everything was in balance. Everything was working very fine 100 years back. You see, there was a plant kingdom, there was animal kingdom. Everything started when human beings started become greedy. Okay, so if you look into last 20 years, you must have seen that human being are the major causes of this environmental destruction. For example, if you take the example of Amazon, there was a rapid fire which happened, and probably millions of animals were killed by fire, and that was a man-made fire, by the way, and no country took immediate actions to stop that fire. And you know the size of Amazon, right? That is a very big size jungle, okay, forest. So that took several days to stop, and many animals were killed because of the greed of certain people who wanted to make either their restaurants or their that kind of resorts or many other things which we do not have exact data. So we have to understand that character building starts first. First we have to do, and that's why I believe that institution like Brahmakumaris has a very important role. There are many other societies which are doing exactly the similar role. We have to first do that character building. Once we do that, the rest of the things will fall in place. The rest of the things will fall in place. We have so many recommendations. Since I am a professor in IIT Patna, I used to do this kind of motivational talk in our first year for induction program. I take about 2 hours of lecture, and there we do many things. One of the key item is self-motivation. And in that component, I also talk about these important activities like practicing yoga, meditation, prayer, then doing music, doing good exercise, right food habit, drinking habits, and regular sound sleeps, because these things will imbibe in your mind of a good character. Once you have a good character, probably then you will not drink at all. Probably you will follow proper speed limit. Probably you will follow not using a mobile phone. And by that way, you will save accidents. Similarly, you will take more responsibility to save this planet Earth. With this introduction, I'll give you some statistical data, because these are very important, and these are done by environmental researchers. And as a matter of fact, this was predicted in the year 2008, and already we have seen that this is quite possible if you don't stop all those wrong activities, and if you do not start our right activities right away. Okay, some of them are, every alternate year there will come tsunami. In the year 2000, I think 4, if I'm not wrong, 2004 December, tsunami actually occurred in Chennai. Okay, so by 2025, every alternate year there will be tsunami if we do not correct ourselves right now. About 40% of Himalayan glaciers will be vanishing by year 2037.
So these two important things are so much. There are many other things. I'm just quoting only two important things because they are directly connected with our geographies, many of our activities, our existence, and they are related with our drinking water. So these two things, there are many other things I said, these are directly related with climate change basically. So we have to really reflect on that, how to reduce them, how to postpone this kind of maleffects on the climate. Similarly, we have to be being a young generation, we are very fortunate that India has the highest number of young population whose age group is between 25 to 35. We have to take leadership on this. And we are very happy that government is taking so many initiatives, including G20. And there are so many Atmanirbhar Bharat, Make in India, so many initiatives for entrepreneurship. So we have to really find out each and everywhere where there is a scope to come up with better solution which reduces pollution and all other relevant things which will save this planet Earth, dear planet Earth. So I'll give a couple of examples. For example, somebody invented CFL LED, and you know that impact, it will eliminate about 1,000 billion pounds of greenhouse gases. It is equivalent to taking 30 million cars off the road. You can imagine the value of one single invention. Similarly, as a common man, we can do a lot of difference. For example, if a common man can use bucket and mug instead of taking shower, one can save about 40 to 45% usage of water. And that is probably going to be very important in near future. Similarly, one can share and care through carpooling, pollution-free Diwali. We can take stairs for first floor or second floor instead of taking lifts. This kind of small, our lifestyle habits, corrections, we can do that. And we can basically improve for this planet Earth. And most important of that, I believe, all of us should start planting 4 to 5 trees at least every year. And since I belong to village, last year, just before the corona, I planted about 32 trees. Probably only 4 or 5 survived, but I tried. 32 trees I planted that time. And I believe that once I get more time this year, I'll again plant about 25 trees. So I request whoever is listening this one, make sure that these two aspects of planting trees and saving of water or unnecessary wastage of water, these two aspects can have massive impact. Okay, so there are many other aspects. I'll not take too much time. So if we can do this kind of saving of energy, drinking water, prevent or reduce pollution, then we can save this planet Earth. And this is a picture I took when my friend was planting a basically tree in this campus just a few years back. And recently we have visited to Nainital. I have taken a couple of pictures. So this is our dream to preserve this kind of beauties on this country. This is very important, and we should encourage our future generations. If you really want to see this kind of beauties across the country, then take your initiative. So for a planet that our future generation can cherish, this should be our dream. Let's dream and work together. Life is a gift from God, and how you make it is a gift to God. Because probably life is really not like a movie, it is like a real life. So you cannot have a chance to retake. So once it is really destroyed, probably will not get back anymore. That's why it is our choice whether we really want a massive fire like what happened in the forest of Amazon. We have to protect that kind of things. I think government should take more initiative. If there is any fire breaks out in a jungle, in a forest, I have seen many times that hardly anybody takes care how to stop that fire. So there is a lot of requirement, this kind of, that whoever is the forest officer or government people who are residing or are taking care of our basically planetary or our forestry, basically, we have to take more care, so that we call it davanal, means fire in the forest. We have to save that if you really want to do that. So the choice is ours, but to do that, we have to start humanity first, and humanity starts from within. I have seen one important news a few years back when basically people
from Sikhs community. They opened Gurudwara for offering the namaz. Today is also Eid. So I am sharing this information in the name of humanity that Sikhs brothers opened the Gurudwara so that the Muslim brothers could offer their Eid namaz, because that was a very devastating day. A huge flood happened because relentless rain was happening in that particular couple of days before the Eid. And that's why their Six brothers came in front and they helped. And this is a picture came in Times of India. I have shared with the students. I'm sharing with you all. So first we have to build up humanity first, then we have to build up character, and probably then we can do that. But as a scientist, I do some amount of research in the treatment of wastewater, particularly post-COVID. We have seen that a lot of pharmaceuticals, they are getting basically dumped into wastewater, and how to treat that. On that topic, I do a lot of research. And with your blessings, recently I have become associate professor based on my research and contribution to IIT Patna. Great, sir. So with this small note, and with the best wishes to the community of our particular country and across the globe, I stop it here, and I'm looking forward to listen to others. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you. Well, wonderful orations and wonderful deliberations by coming out from a scientist. Sir, I would like to say that you are sounding more like an environmentalist and a great human being, and that is what is required. Apart from being subject specialist, one needs to be really thinking from the heart rather than thinking from the mind, and that is what we are looking forward to. If people put their mind, not only the mind, but rather the heart. The news clip you showed about Gurudwara being opened for the worship for Muslims, and this shows another way of saying that we care for everybody who is living on this planet. So what a great example, sir. You have really won the hearts with that presentation. And I'm really, from the core of my heart, I'm thanking you for your deliberation, sir. Thank you very much. You have done an excellent job by putting the subject on right in the hearts of the people. So thank you very much, sir. So, Thank you. well, sir, I would like to go ahead. There are a lot of people who joined, and one of them is brother Mr. Deepak Mishra. He is working on a de-addiction campaign in the whole of the country. And I welcome brother Deepak Mishra and Mr. Anil Kumar Yadav. He is also a member of the National Human Resource Development Network. So before I ask, I had a presentation with Chandresh, Chandresh ji from Mount Abu, who has joined. But I would just ask Sister Shruti. She has a very small deliberations to make. And by the time the presentation is prepared for Brother Chandresh, I would like Shruti to just deliberate on this topic. She is a research scholar with Patna University. So Shruti, just be quick cap, because we are already 8 to 15. So Shruti, I will request you to just deliberate your views in this session. Over to Shruti ji. Shruti ji. Unmute yourself. Shruti, are you hearing? Hello. Hello. Take 2-3 minutes. Yes. And then just say your views. Yes, thank you. Shruti, will you like to deliberate? Yes. Yeah, please. Hello. Am I audible? Yeah, you are audible. Sorry. Shruti ji, start your Okay. presentation. Do you have a PPT, or would you like to speak extempore? Yes, I have PPT. So start sharing the Okay. screen. Okay, great. Go ahead. Okay.
Shruti ji, are you hearing? Start your presentation now, please. People are waiting. Okay. Hmm. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Okay. Just I'm starting. Yes. So, yes. Good evening to all, and I'm very much thankful for this opportunity to speaking among all the intellectuals. And I'm so much thankful to Shamanta sir for this great enlightening talk, and that we have learned a lot about how to protect our environment. And this is time to, Shruti ji, thoda sa we speaker, have to- please get near to the speaker. You are not very audible, please. Yeah. Okay. Continue. Shruti ji, continue. Shruti ji, you have unmuted. Shruti ji, you have muted yourself. Unmute. There is a problem, I guess. Okay. So there is a problem. Shruti ji is not able. Yeah, she is unmuted. Now go ahead. So, okay. So now am I audible? Yes, clearly? you are audible. Please continue. We are waiting to hear you. Okay. So my topic is today is about reconnection with nature. As we know that we are very much, alienating ourselves from the nature, and that's why we are not, very much concerned about the nature in present time, and that's why we need to think about it. And for the connection with the nature, we have to be spend time with the nature and building a friendly relation with the nature. For the children, we can inspire them for the playing outdoor games, walking, socialize outside, and watching sunrise and sunset. So these things will help them to reconnect with the nature, and also we need to make a connection with nature so that our mental and the physical health also will get benefited for it. So, and one more thing, that our happiness also increase when we see the beauty. We get some purpose in our life when we spend time with the nature. So, and this will lead to help to protect our environment also. We start making connection with nature, then we start judicious use of resources. That will lead to reduce the global environment problem. That is the present time the most critical issue for our survival. So we need to understand that the nature has taken the responsibility to sorry sustain to our disturb you, life. So Shruti. yes. Your screen is not shared. Can you share it? Okay. Again, I'm sharing. चल कौन कपड़ा बाहर है If there is a problem, you can send your PPT to me. I will share it for you. Okay, just I'm sharing. I'm sending. Okay, if anyone else want to speak, can continue, and Okay. I will. Just you say a few do words it about the work you have done. You have the work you have done till now on mental pollution. Yeah, just a few lines. Yeah. Yes. That's I'm doing now research in Patna University, and my topic is that is the critical inquiry of human relation with nature, and Wonderful. that's what I'm very much interested in the topic, and that's it feels good to me to make a good relation with the nature and work with it. And that's why Wonderful. I'm also awaiting the people around us so that we can protect our environment. And recently I'm also going to give some lesson to the schools about how to make a reconnection with the nature, and that's the part of my research. And these things will help definitely because at an individual level, if we do a small things, that will definitely will contribute to protect our environment. That's Yes, what yes. Small I want things to are going to say. impact And the thank bigger you so things. much. Yes.
Thank you, Yes, Shruti. we need to understand that. Yeah, with Thank you very so much small for this efforts thing. and at the level of the students, you are going to schools, you are creating awareness, and that is what is required right now. Trying think globally and act locally. So you are working on that. Yes, That's yes. great to hear that. And now I have a person Because at waiting, Brother Chandresh Braddaji. He has done a remarkable work in the field of adopting villages, because the villages are also being depleted with the resources. So he has joined us from the headquarters of the Brahmakumaris, and he is a member, core member of one of the rural development wings. So we have been talking more on pollution on the in the urban areas, and just want to hear. He has a PPT. So Brother Chandresh, just introduce yourself, and then I will share your PPT. Brother Chandresh ji from Mount Abu. ओम हिंदी में भी बोल सकते हैं भाई शांति। साहब, हिंदी में भी बोलेंगे। जी जी, ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जी, ये ब्रह्मकुमारीज का जो मुख्यालय है माउंट आबू, वहां पर हम सेवारत हैं पिछले 8 वर्षों से। समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आश्रम से करीब 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो हमने बीएससी मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हुई है, और वैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में रोल था यहाँ पर सेवाओं में, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं गाँवों को हमारी ज़्यादा आवश्यकता है और इस विषय को उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पिछले 4 वर्षों से हमने अपनी बाकी की सेवाओं से छुट्टी लेकर के विशेष गाँवों के सर्वांगीण विकास पर कार्य करने की शुरुआत की है। इसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है ब्रह्मकुमारीज की जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग है उसके अंतर्गत। उसको नाम दिया गया है राज ऋषि विलेज प्रोजेक्ट। अच्छा, तो ये जल जन अभियान आपने शेयर किया? ओके, आपने जल जन अभियान शेयर किया ब्रदर? हेलो हेलो हेलो, इज द स्क्रीन शेयरिंग विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग मिल रही है? हाँ संजय भाई, मिल रही है। हाँ जी, हाँ तो जी। चंद्रेश ब्रदर, आप जल जन अभियान का प्रेजेंटेशन भेजे हैं, तो इसको रन करना है या बिल्कुल राज ऋषि विलेज? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नहीं नहीं, नो गो जल जन अहेड। अभियान का प्रेजेंटेशन पे ये मैं केवल भूमिका जी दे जी, रहा हूँ प्लीज गो अहेड, प्लीज ब्रदर, कि सॉरी फॉर हमने इंटरप्टिंग, प्लीज गो गांव अहेड। के सर्वांगीण विकास पर कार्य करना शुरू। हाँ, इट्स ओके। हमने गांव के सर्वांगीण विकास पे कार्य करना शुरू किया है, जिसमें 9 एसडीजी गोल्स पर हम काम करेंगे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा पानी का है। तो ये पानी का विषय जो है उसको लेकर के ब्रह्मकुमारीज की ओर से और भारत सरकार ने मिलकर के एक ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसको नाम 16 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया था। और गजेंद्र शेखावत जी फिजिकली प्रेजेंट थे पर, और काफी अच्छी उनकी टीम के साथ चर्चा होने के बाद ये जल जन अभियान को लॉन्च किया गया। जल जन अभियान में हमने देखा कि जो पानी का जो इस्तेमाल है वो गाँवों में होता है, खेती में होता है। तो 80% ऑफ द वाटर कंजम्पशन इज डन इन द विलेजेस। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये भारत सरकार का एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है उन्नत भारत अभियान। इसमें भी उन्होंने सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा हुआ है। तो इसको हमने इनसे साथ मिलकर के इसकी जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो आईआईटी दिल्ली है, और आईआईटी दिल्ली के साथ हम मिलकर के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ गाँव के सर्वांगीण विकास पर काम करेंगे। शुरुआत हम पानी से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे आप देख रहे हैं जो उन्नत भारत अभियान है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम किया गया है और स्टूल डेवलपमेंट पे भी काम किया गया है। तो इसमें जो इसके जो चेयरपर्सन है इस पूरी कमेटी के, डॉक्टर विजय भटकर, आपको शायद पता होगा, जिन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो उनकी बहुत आग्रह थी कि ब्रह्मकुमारीज हमारे साथ मिल करके इस एक्टिविटीज को इनिशिएटिव करें। तो हम अब
इस तरीके से इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संजय भाई जी नेक्स्ट स्लाइड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। जी भैया, you are audible. हेलो। स्लाइड चेंज करेंगे संजय भाई? संजय भाई जी शायद नेटवर्क इशू की वजह से आउट हो गए हैं, आप कंटिन्यू कीजिए वो पोजीशन। ठीक 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 है। तो इसमें जल जीवन अभियान के अंतर्गत हमने ऐसा प्लान किया है कि जो कम से कम पूरे भारत में हम 5000 वाटर बॉडीज को रिजुनेट करेंगे और रिचार्ज करेंगे। साथ साथ हम 10,000 से भी ज्यादा ऐसे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे जिसके माध्यम से हम गांवों तक और जन जन तक ये विषय को स्पष्ट कर सकें और इसका महत्व लोगों को समझा सकें। और कम से कम 1 करोड़ लोगों को हम जल शपथ दिलाएंगे और उनके जल का प्रति उनकी जो गंभीरता, जो विषय जो इतना गंभीर है, उसकी गंभीरता से उनको अवगत कराएंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ गांवों को एडॉप्ट करना शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हमने गुजरात के कच्छ से की है। गुजरात के कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, लोगों ने पानी के कमी के कारण ही वहां से कई लोग माइग्रेट होके गए हैं। पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लैंड वाइज, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है क्योंकि वहां पर पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जो कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अबडासा तालुके में एक भारापर गांव है, वहां से हमने इसकी शुरुआत की और वहां पर हमने गांव वालों को जागृत किया, गांव वालों को विषय से अवगत कराया। ऑलरेडी वहां पर एक भी बोर नहीं है, उस पूरे गांव में एक भी तालाब है वहां पर, लेकिन बारिश के समय में पानी जो है वहां से बह के निकल जाता है। तो वो कैसे बारिश का पानी जो है वो जमीन में नीचे उतरे, केमिकल फार्मिंग वहां हो रही है, वो नेचुरल फार्मिंग में कैसे कन्वर्ट हो, इसके ऊपर प्रयास किए और बहुत अच्छे हमें मिले। छोटे छोटे प्रयोग हमने वहां पर जल संचय के रूप में किए। छोटे छोटे स्वेल्स बनाए, छोटे छोटे पॉन्ड बनाए, छोटे ट्रेंचेस बनाई, जिसके माध्यम से बारिश का पानी जमीन में नीचे उतरे। लकीली पिछले 2 वर्षों से वहां कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बारिश अच्छी हो रही है और जो हमने इंटरवेंशन वहां पर किए उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। पानी जमीन में नीचे उतरा, ग्राउंड वाटर उनके अप आए और बहुत ही रिस्पॉन्स में जब प्रैक्टिकली चेंज देखा गांव वालों ने, तो वो और भी अभी उनका उमंग उत्साह बढ़ा है। गांव वाले खुद अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे, खुद मोटिवेट हुए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग गांवों में जब सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर में, फिर पानी के बाद पानी के साथ स्वच्छता और फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, प्रकृति को बढ़ावा दिया गया। और ये जो एक्टिविटीज हुई इसको लास्ट भारत के जल मंत्रालय की तरफ से हमारी जो टीम है वो जल का अवार्ड दिया गया। तो अब हमने इसी विषय को पूरे भारत में, ये जो गांव हमने सैंपल बनाया, ऐसे सैंपल गांव हम पूरे भारत में प्रयोग करना चाहते हैं। भारत में इसके करीब करीब हमने लिस्ट की बनाई है। 3000 विलेजेस में एक्टिविटीज हम करेंगे इस 1 साल के अंदर और सभी का भी इसमें साथ और सहयोग मिले। जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, मैंने सुना जैसे कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका हमने सुना, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो अगर अनुभव इस प्रोजेक्ट अपनी सेवाएं देना चाहें तो आप सभी कम कर और हम मिल करके माँ प्रकृति की सेवा करें, इसी भाव के साथ को देते हैं।
Hello. 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 Sorry, I was unmuted. Am I audible to you? Am I audible to you? Am I audible to you? हाँ संजय भाई, आप ऑडिबल हैं। Anand sir, now I was just checking whether you are still with us. I'm happy that you are still with us. So sir, you have been a part of the government policies and a part of teaching also in this engineering students, and you have also been into research, and you are a part of the science and technology department, and you are also looking after the research work being done by the important institutions. So who can be a better person to deliberate on this topic of how we should treat the earth and what is required at the moment? So Professor Anand sir, over to you, and very happy to have you here in this discussion, sir. Thank you, sir. Please. थैंक यू संजय भाई। ओम शांति। आपने तो मुझे लिसनर के रूप में कनेक्ट किया था, मैं स्पीकर के रूप में तो how can we not have your views, sir? बिल्कुल तैयार नहीं था। और मैं ना कोई साइंटिस्ट हूँ, ना मेरा इस फील्ड में कोई रिसर्च है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक अर्थ डे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अप्रैल माह ही बता रहा है कि अर्थ डे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस कार्यक्रम के सबसे पहले बीके संजय भाई जो एक्सपर्ट्स हैं, बीके अरुण साहू जी, डॉक्टर एसके समंता जी, ये नेक्स्ट वन इज सुरेश सिन्हा जी, डॉक्टर चंदेश्वर खान जी, श्रुति परमार जो पटना यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हैं, और राजयोगिनी बीके रानी दीदी, और जो लिसनर हैं, मैं उन सबको पहले इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थ डे कि इसका थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन जान लें कि आखिर अर्थ डे की को इस तरह से सेलिब्रेट करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो जो बैकग्राउंड है थोड़ा यही है कि जब प्री इंडस्ट्रियल था एरा था, उद्योग स्थापित नहीं हुए थे, वो एरा था 1850 से 1900 के बीच का। तो उस समय इंडस्ट्री नहीं होने के कारण जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कोल वगैरह से जो या ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, वो एटमॉस्फेयर में वो नहीं जाने के कारण जो टेम्परेचर था वो कंफर्टेबल था ह्यूमन बीइंग के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए। लेकिन और 1850 तक का जो डेटा कहता है, वो जो टेम्परेचर हर 10 साल पे जो इंक्रीज हो रहा था उसका रेट था मात्र 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड, हर एक 10 साल पे वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल एरा आया है 1900 के बाद, तो वो हर एक 10 साल पे बढ़ के हो गया है 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड। तो इसमें और ये जो तो सबसे पहले ये जो 2000 जो पेरिस समझौता हुआ 2015 में कि अगर जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है जो 1850 का, अगर उसके रेस्पेक्ट में हम 1.5 डिग्री तक ही टेम्परेचर को बढ़ने दें, अदरवाइज अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कंट्रोल हम नहीं कर पाए, तो आप जो हेलो सर यूर ऑडिबल या तो अगर 1.5 डिग्री राइट फ्रॉम द बेस लाइन इज द बेस ईयर इज 1850, उसके बाद से हमें सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर इससे अगर हम बढ़ गए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिमिट को नहीं रख सके, तो इसका जो इफेक्ट्स हैं वो तो अप्रैल माह में दिखना शुरू हो गया है अभी से ही, जैसे हीट वेव, अधिक बारिश, पानी की कमी, सूखा, बर्फ का पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, और जो क्लाइमेट चेंज है वो काफी उसमें अनसर्टेनिटी का आना, और इसका पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो हमारे दुनिया भर में जो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारे जो ह्यूमन बीइंग के लिए और सब जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट हैं या नेसेसिटीज हैं, उन सब पे इसका इल इफेक्ट पड़ने जा रहा है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए है कि हम कैसे इस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टेम्परेचर लिमिट को मेंटेन करें। और इसीलिए 2015 में रिजोल्यूशन लिया गया यूनाइटेड नेशन ये में कि हमें सारे वो प्रयास करने हैं जिससे टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बियॉन्ड नहीं जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए फिर 17 सस्टेनेबल गोल भी आया है,
जिसमें ये 2030 तक ये गोल रखा गया है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स एंड इलनेस हैं फ्रॉम हैजार्डस केमिकल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इसे हमें रिड्यूस करना है। और अल्टीमेटली 17 सस्टेनेबल गोल में रखा गया है कि हमें एक हेल्दी लाइफ एंड टू प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल बाय 2030 फॉर ऑल एजेस। ये हमारा मैंडेट है एज पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सारी चीजें रिलेटेड हैं हमारे अर्थ, ये सॉइल, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो कैसे हम इस पर्यावरण को संतुलित रखें, और पर्यावरण संतुलन से मतलब यह होता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीजें हैं, उनके बीच पूर्ण सामंजस्य हो, तब जाकर के हम पर्यावरण संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं। अब कारण क्या है? अगर हम थोड़ा सा अपने प्राचीन ज्ञान को देखें तो हम इस सब का कारण ये रहा कि हम प्रकृति और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने वेद और अपना जो गीता है, अगर उसमें पर्यावरण के संबंध में अगर आप थोड़ा देखना शुरू करें तो वेद में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश, इस सब के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करने पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। मैं ऋग्वेद का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऋग्वेद का में है पृथ्वी पूच उर्वी भव, अर्थात समग्र पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश परिशुद्ध रहे। ये एक आशीर्वाद के रूप में ऋषि मुनि ऋग्वेद में कह रहे हैं। और अगर हम भगवत गीता का अगर चैप्टर पढ़ें, चैप्टर 10 का श्लोक का जो 31 है, वो कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं पवित्र करने वालों में आयु हूँ, नदियों में श्री भागीरथ गंगा हूँ। ऋग्वेद की बात अगर आप करें तो वो कहता है कि अपसु अंतः अमृतंग अपसु भेषजंग, अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधि गुण विद्यमान रहते हैं। और फिर अथर्ववेद जो कहता है श्रद्धा न आपस्तस्वे क्षरंतु, अर्थात नदियों, तालाबों व पोखरों आदि में मल मूत्रादि विसर्जन को पाप कर्म समझा जाता है। और फिर आप ऋग्वेद की बात करें तो मैं ज्यादा संस्कृत श्लोक नहीं कहूंगा, लेकिन इसका हिंदी यह है कि स्वच्छ वायु प्राणदायिनी औषधि के समान है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ एवं निरोग रह सकता है। और फिर बाद में ऋग्वेद कहता है कि एक वृक्ष का रोपण व पालन समाज को योग्य पुत्र देने के समान है, तथा एक बाग लगाना एक न्यायी राजा बनने वाले पुत्र को जन्म देने के समान है। और इसीलिए अगर हम लोग कभी देखते हैं कि ये जो भगवान को हम लोग अगर कई हमें पढ़ने का मौका मिला था, तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, अर्थात इन चार चीजों को भगवान के समरूप माना गया है। भगवान ही के रूप हैं भूमि में, गगन में, वायु में, नीर में। तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर हमारे मन में जिस दिन ये बात आ गई कि हम भूमि को भगवान मान करके पवित्र रखें, स्वच्छ रखें, गगन को भगवान मानकर पवित्र और स्वच्छ रखें, वायु को भगवान मान करके पवित्र और स्वच्छ रखें, नीर को अर्थात पानी को अगर भगवान के समरूप मान करके स्वच्छ रखें, तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव का कहीं कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। तो मेरा अंतिम रूप से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। एक सारे पॉल्यूशन की बात तो हम कर गए, उसमें हम सॉइल पॉल्यूशन की बात कर गए, वाटर पॉल्यूशन की बात कर गए, एयर पॉल्यूशन की बात कर गए, लेकिन भाई संजय कुमार जी और उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मैं जो बात करूंगा, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण देन है कि सबसे बड़ा प्रदूषण आज के दिन में मानसिक प्रदूषण है। और इस मानसिक प्रदूषण को अगर हम ठीक कर लें तो फिर किसी भी तरह का प्रदूषण इस पृथ्वी पर व्याप्त नहीं होगी, और हम अपने पूरे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सफल होंगे। और इसमें जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की भूमिका है और जो संजय भाई निभा रहे हैं, तो संजय भाई से मेरा आग्रह होगा कि मानसिक प्रदूषण को दूर करने का वो सारा ट्रेनिंग, जितने तरह के प्रशिक्षण, जितने तरह के शिविर का आयोजन करें, वो हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे और इसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। तो बस मैं बात अपनी इतनी ही पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you,
Professor Dr. Anant Kumar ji, you have deliberated so well on this subject. Nothing remains much to be dealt because जो point of view जो उभर के सामने आया है वो यही है कि विश्व के पर्यावरण को अगर संभालना है तो उसमें हमें अपने मानसिकता पर काम करना होगा और सदियों से जो पुरानिक परंपरा रही है धरती को एक ईश्वर का एक देन समझ करके इसका रिसोर्सेज को यूज करना, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, और वो कैसे होगा तो आपने बताया है वो मेंटल कंडीशनिंग से होगा और मेंटल प्रोग्रामिंग से होगा और स्पिरिचुअल कंडीशनिंग ऑफ माइंड से होगा। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव, हमारे बीच में बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर वेट कर रहे हैं अभी। प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान जी को मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज चंद्रेश्वर खान साहब राजयोगिनी रानी दीदी से काफी प्रेरित रहते हैं। आप टाटा नगर से ज्वाइन किए हमारे बीच में एंड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि दीदी अगर आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और हमारे बीच में सुरेश चंद्र सिन्हा है, ही इज वेटिंग फ्रॉम रांची, और चंद्रेश्वर भाई हैं माउंट आबू से, प्रतीक्षा बहन है, शी इज ज्वाइन फ्रॉम भुवनेश्वर, एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पटना आल्सो। सो बिफोर वी गो अहेड, बिकॉज शी हैज सम वेरी अर्जेंट, अभी भी फिजिकल मोड में उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया था, यहाँ पर अर्थ डे लॉन्चिंग हुआ था, लेकिन वेबिनार मोड में अभी नहीं किया था, तो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आप सभी को इट्स माय प्लेजर टू मेक यू इंटरैक्ट विथ राजयोगिनी रानी दीदी जी, हु इज अ प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ इंडिया, और ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आप एक वेरी सीनियर सिस्टर के रूप में वहां पर अपनी सेवाएं देती हैं, एंड शी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ओवर 60 years in the realm of spiritual enlightenment. So I hand this opportunity to Rajyogini Rani Didi ji. She will address and give blessings on this occasion of Earth Day. Thank you. Your line. Om Shanti. Audible? She is audible? हेलो, हाँ, ओम शांति ऑडिबल। रानी बहन ओम शांति ऑडिबल। रानी बहन ओम शांति। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। हमारी धरती माँ, जिसकी सभी ने बहुत प्रेम से वंदना की है, सेवा की है, हर रोज इसको प्रणाम किया है और इसको आगे से आगे फलीभूत करने का भी जिम्मेवारी ली है। यही धरती माँ है जिसके अंदर से हमें जल भी प्राप्त होता है, फल फूल भी प्राप्त होते हैं, और हमें पूरी खाद्य सामग्री भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। सब प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाली ये धरती माँ है। इस प्रकार से ये धरती माँ की महिमा तब है जब इस पर रहने वाले चरित्रवान हों, गुणवान हों, प्रभु प्रेमी हो, अपने जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाकर चल सकते हो, तभी इस धरती माँ की महिमा है। तभी भारत बहुत सर्वश्रेष्ठ कहलाया। भारत माँ के अंदर वो सारे गुण जिसको कहते हैं, एक समय था यहाँ ही स्वर्ग था, यहाँ ही देवी देवताओं ने राज्य किया। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता, जितने भी देवी देवताएं हुए सब इस भारत भूमि पर हुए। इसलिए ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म भारत पर हुआ। यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम से, अच्छे व्यवहार से आपस में मिलते जुलते हैं और सदा ही प्रेम से रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें आत्मदर्शन कराती है, परमात्म दर्शन कराती है। हमारा परमात्मा से कितना निकट संबंध है। परमात्मा हमारे परम पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत को ऐसा सुखमय, आनंदमय, शांतिमय और शक्तिमय बनाएं जिसकी महिमा सदा ही होती रही है। तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाए, इसके लिए हम प्रतिदिन हर रोज क्लास करते हैं, जिसमें हम ये अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ और एक परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे संबंध को अनुभव करके
अपने जीवन को इतना श्रेष्ठाचारी बनाए, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने in spite of dwindling health, you have given us your precious time, और हमारे बीच में इतने सीनियर साइंटिस्ट लोग हैं। We would like to hear next from हमारे चंद्रेश्वर खान साहब is waiting since long from टाटा नगर। तो चंद्रेश्वर खान साहब, आप सेल में सीनियर एजीएम HR एंड ट्रेनिंग रहे हुए हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट एड्रेस अस फॉर अ व्हाइल। खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी, बीके भाई संजय जी। भाई जी को प्रणाम करते हुए मैं रानी बहन को और अनंत शुभकामनाओं के साथ आनंद जी और जितने सामंत जी और आप सभी बैठे हुए हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। देखेंगे कि ओम शांति, क्लास में जाते हैं, ओम शांति, इस चीज की कहीं कमी हो गई। और हम यदि बात करें तो पूरी दुनिया उलझ गई प्रोडक्शन, प्रॉफिट, पीपल, थोड़ा जो उनको दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये चेतना आई कि आप प्लेनेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि लेट अस हैव इन आवर हेडसेट, इन आवर माइंडसेट, जो भाई अनंत जी ने अनंत शुभकामनाओं के साथ में कहा कि हमारे हेडसेट पे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, पीपल हो, लेकिन प्लेनेट एंड पीस वो जरूरी है। और वो हमें मिलेगा तब जब हम अपनी माँ की शरण में जाएंगे। आदि अनादि काल से कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है, उसने हमारा भरण पोषण किया है, हमारे पुरखों का भरण पोषण किया है, लेकिन हमने उनका शोषण किया। और शोषण इस हद तक किया कि अब यदि हम बदले में परिपोषण नहीं करेंगे तो हम नष्ट प्राय हो जाएंगे। The situation is very alarming, and everybody, be the scientist, be the social scientist, be anyone, the great person, the great philosopher, the spiritual masters, everybody is saying that if we'll continue to behave hell with the nature, hell with the earth, then hell is very nearby. And our existence is in problem. So it's a very, very important occasion when we are celebrating this. तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हमने जो सोचा है वो मैं सीधे, क्योंकि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातें सामने आई हैं और राजयोगिनी बीके रानी दीदी और अंजू दीदी यदि सुन रही हैं तो उन सबों को प्रणाम करते हुए, ओम शांति कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि माँ हमेशा माँ होती और धरती माँ हमें अमरता दी। यदि धरती माँ की सेवा अब हमने नहीं की तो उससे जो घाटा होगा वो उसका अंदाज हम लोगों को लग गया है। तो इसे पोल्यूशन से फ्री होना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को देखना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन करने होंगे और जो भी समस्याएं हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। और ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें हम सभी मिलकर समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त ने बिल्कुल गुप्त तरीके से नहीं, खुले आम इन चीजों को रखा था। तो along with dealing with this aspect, क्या क्या हमसे गड़बड़ी हुई। नंबर 1 कि जब हम 3R की बात करते हैं कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, तो ये हम करें
लेकिन मेरा ये कहना होगा कि कुछ वेस्ट हो ही नहीं। ऐसे पद्धति का हमें विकास करना पड़ेगा कि नथिंग इज वेस्ट, रादर वेस्ट इज वेल्थ। ये यदि हम स्थिति पैदा कर लेते हैं कि जिसको हम ये बोलते हैं कि ये बेकार है, वो एक संपदा है, तो हमारी मनोवृत्ति, हमारे चिंतन में एक नई चीज आएगी और उससे एक हम हैप्पी होम बना पाएंगे। क्योंकि प्रकृति में ये व्यवस्था थी। सिर्फ मैं 2 उदाहरण दूंगा। क्या आज आप देखेंगे कि हम सभी बोल रहे हैं एक धरती, और बात सही है, एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य। इसमें हमें ये जानना पड़ेगा कि अयं निज परोवेति गणना लघु चेत सांग उदार चरिता नाम तुम वसुदेव कुटुंबकम। ये इस चीज पर आना, जब उदार हमें होना पड़ेगा। और वसुदेव कुटुंबकम तब होगा जब हमारी उदारता बढ़ेगी। तो इस उदारता को बढ़ाने में प्रकृति और संस्कृति ने जो व्यवस्था की कि भवन बहुत बन गए, उत्पादन बहुत होने लगे, लेकिन वन उजड़ते गए। वन जैसे जैसे उजड़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जीवन विनष्ट होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। तो जहां वन है वहीं हमारा जी लगता है, वहीं जीवन है। इस चीज को हमारे सोच में, हमारे चिंतन में बराबर लाना पड़ेगा और इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे देखेंगे कि वनों में पहले ये व्यवस्था थी कि वहां सिंह बाघ पाले जाते थे। सिंह वहां का राजा होता था, तो हमने राजा को मार दिया। यदि कहीं राजा नहीं रहेगा और वन उसी तरह से विनष्ट हो गया, अभी भी हम सुरक्षित वन बनाए और 10 सिंह वहां रखते कि जो करना चाहेगा वो करे, देखिए कोई वहां जाएगा नहीं। आप देखेंगे कि पोखर में, नदियों में और बड़े बड़े जलाशयों में जान करके घड़ियाल रखा जाता था कि उसका जिस समय में जरूरत है उसको एक किनारे में रखा जाए, और जिस समय में जरूरत नहीं है लोग उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करें, उसको छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे जो नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था थी उसे हमें लाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल तब होगा when we will have the other 3 are respect, response and responsibility. इन चीजों को यदि हम लाते हैं तो मैं समापन करना चाहूंगा कि हर घर एक आश्रम बने, यानी हर घर में एक छोटा वन। हर घर में यदि एक छोटा वन होगा तो वहां जीवन बनेगा, वहां केवल भवन नहीं बनेगा। ये नहीं कि भवन की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं समापन करना चाहूंगा कि सबका प्रलयंकारी जो अभी सबसे बड़ा जानवर जो हो गया है, खतरनाक जानवर, वो आदमी। आदमी को अपनी जो दानविक प्रवृत्ति है उससे उसे निवृत्ति पानी पड़ेगी। और वी आर ह्यूमन बीइंग बट we have forgotten being human. Human being हम हैं, but we are being human or not. That's the question which each one of us has to address, has to think, and we have to act on that. पढ़ाई लिखाई हम लोगों की बहुत हो गई है, लेकिन पठका पाठका मूर्खा क्रियावान पंडिता के सारी चीजों को हमें क्रिया में लाना पड़ेगा। और क्रिया यदि हम हो गए तो पहले जो तमाशा होता था, शूटिंग होता था, तो उसमें एक बड़ा प्रचलित था कि लाइट कैमरा, मैं वेब पर नहीं कर सकता हूं, लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन यदि ठीक नहीं हुआ तो कट, यानी आपका लाइट और कैमरा भी खत्म। तो हमें इन चीजों को
हैप्पी होम, हैप्पी वर्ल्ड एंड हैप्पी वे ऑफ लाइफ, इन चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि हम बाढ़ वाले इलाके से हैं और बचपन में हम लोगों ने बाढ़ में गुजारा है, पानी की कमी नहीं, लेकिन वहां लोगों से प्रश्न पूछा जाता था कि कोई आदमी आया, उसके पैर में पूरा कीचड़ भरा हुआ है, तो बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? पानी की कमी नहीं है। तो जवाब ये होता था कि पहले वो बांस की बत्ती से खालों को हटाएगा, गंदे कपड़े से पैर को साफ करेगा, उसके बाद पानी से साफ करेगा, क्योंकि पानी कम लगे। जहां पानी ही पानी है, लेकिन पानी नहीं रहने से जो हानि होगी वो हमारी जुबानी बोल रही है। भाई संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शामिल करने के लिए और इतने महान ऋषियों से मिलवाने के लिए, सुनने का मौका देने के लिए। ये मेरा अहोभाग्य है। ओम शांति शांति शांति। और ये हमें, ओम शांति हमें बल देता है। लोग जब गुजर जाते हैं तो लोग बोलते हैं शांति शांति शांति, और जीवन भर अशांति। तो जीवन में शांति प्राप्त कीजिए। लोग जब गुजर जाते हैं तो राम नाम सच है, और जीवन में राम नाम नहीं लिया। तो ऐसी मनोवृत्तियों, मनोधारणाओं का जब हम विकास करेंगे तो उससे हमारी माँ खुश होंगी, और वही आज हमारी माँ की, हमारी पृथ्वी माता की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओम शांति। आपने हमारे बीच में जो बातें, सुनाई नहीं पड़ा? जी जी, मैंने अभी अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। थैंक यू। बहुत ही अनुग्रहित हूं सर, क्योंकि आपने हमेशा से एक विद्वत जन का जो अदा किया है सर। वैसे भी आपकी बातें में इतनी विद्वता होती हैं, क्योंकि आप सर बिहार के सबसे विद्वान लोगों की भूमि सहरसा से आप बिलोंग करते हैं सर, और झारखंड में रह करके कितने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपने किए होंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको सुना, वो कॉर्पोरेट का ट्रेनिंग कम, बीइंग ह्यूमन की ट्रेनिंग हमें ज्यादा अच्छी लगी। और आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी कि हम भवन बनाने के बजाय घर में वन बनाने पर बहुत अच्छा ध्यान दें। इतना सुंदर शब्दों का चयन आपने किया सर, कि हमारे घर में वन हो, भवन तो बनते ही रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपको आज के दिन में, आज और विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बधाई हो सर। हमारे बीच में सुरेश चंद्र सिन्हा जी, ये सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और दिन दिन की ट्रेनिंग कराते हैं। इनको मैं लास्ट में मौका दे रहा हूं, लेकिन और उसके बाद भी एक दो लोग हैं, लेकिन अन्याय कर रहा हूं सुरेश चंद्र सिन्हा जी के साथ। लेकिन फिर भी हम आपको आज सुनना चाहेंगे सर। आप झारखंड के रांची से हैं और आप फैकल्टी हैं दुर्गापुर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो सर, आज के दिन में आपके पृथ्वी दिवस को लेकर क्या उद्गार हैं सर? आप अपनी बातें रखेंगे। डॉक्टर सुरेश चंद्र सिन्हा जी। सबों को नमस्कार। ओम शांति। Am I audible? नमस्कार नमस्कार। यस, यू आर ऑडिबल सर। मैं केवल बात करूंगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऊपर कि आज के दिन में क्या स्थिति है हमारी। हमारे यहाँ करीब 5500 प्लस नगर निकाय हैं। ये बड़े शहरों से लेकर के और छोटे नगर पंचायत तक की स्थिति है। और अगर ये पूरे जगह की बात करें तो जो गार्बेज निकलता है वो करीब करीब 62 मिलियन टन होता है प्रति वर्ष। इसमें से हम केवल 43 मिलियन टन ही कलेक्ट कर पाते हैं। 19 मिलियन टन पूरा का पूरा ऐसे ही सड़कों पर, गलियों में और डस्टबिन में पड़ा रह जाता है। जो 43 मिलियन टन हम कलेक्ट करते हैं उसमें से केवल 12 मिलियन टन ही हम ट्रीट कर पाते हैं, और बाकी जो 31 मिलियन टन बचता है वो पूरा का पूरा डंप साइट में जाता है। आप हर एक शहर में एक जगह पर, कई जगह पर देखते होंगे कि डंपिंग यार्ड बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ क्रिएट हुए हैं। ये सभी
में जो 62 मिलियन टन पूरा हमारा निकलता है, उसमें से 38 मिलियन टन बायोडिग्रेडेबल है। ये पूरा का पूरा रिसोर्स है जो आज बर्बाद हो रहा है। बर्बाद ही नहीं हो रहा है, दूसरा है कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो करीब करीब 31 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रतिवर्ष इसके कारण जा रहा है। अगर इसको हम ट्रैप कर लें, इसका सही उपयोग करें, इसको ट्रीट करें और इसको जीरो कर सकते हैं, तो पोटेंशियल के रूप में आपको बताऊं कि करीब करीब हमारे पास 90 लाख जो है डोमेस्टिक एलपीजी के बराबर, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के बराबर हमें गैस मिलेंगे। और ये जो क्वांटम होगा वो करीब करीब 1,27,000 टन एलपीजी के बराबर होगा। इसके अलावे जो हमें हरित खाद मिलेंगे वो अलग है। तो आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसको हम जहां से निकलता है वहीं पर ट्रीट करने की कोशिश करें, वहीं पर उसको जीरो करने की कोशिश करें। और जो ग्लोबल वार्मिंग में अभी हमारा ये कंट्रीब्यूशन जो जा रहा है 31 मिलियन टन ऑफ CO2, उसको चेक कर सकते हैं बाय कंपोस्टिंग, बाय बायोगैस, बाय ब्रिकेट मेकिंग। ढेर सारी टेक्नोलॉजी है जो जिसको यूज करके हम इस तरीके के जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन है उसको हम ट्रीट करके और जीरो कर सकते हैं और यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही मायने में वेल्थ टू वेल्थ की ओर जाएंगे, वेस्ट टू वेल्थ की ओर हम जा सकते हैं। मुझे आपने मौका दिया है और मैं प्रेजेंटेशन तो नहीं बना के आपको दे पाया था, लेकिन ये थोड़े बहुत आंकड़े हैं जिसको गौर करने की जरूरत है। और अगर इसके ऊपर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में लगातार कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर सही तरीके से ध्यान देने की जरूरत है और एक्शन मोड में आने की जरूरत है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। That was so nice of you। गागर में सागर भरते हुए आपने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए हमारे बीच में। और चंद्रेश्वर खान साहब ने जो बात की थी किस प्रकार से रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का जो कॉन्सेप्ट है उसके आप एक्सपर्ट हैं सर। आई एम सॉरी हम आपको पूरा नहीं सुन पाए हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग में से कोई व्यक्ति 2-3 मिनट अपनी बात रखना चाहें तो आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज it's already 8 minutes past 9. If you have anybody who is want to speak for 2 minutes, otherwise we will go into a question answer session, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा बोला है, तो उससे उनके डेलिब्रेशन से कोई क्लैरिफिकेशंस, कोई बात किसी के मन में है तो जरूर बताएं। एंड वन पर्सन हैज ज्वाइंड आईफोन के नाम से, तो वो अगर अपना स्क्रीन ऑन करें तो मैं देखूं कि हु इज ही। और यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू डेलिब्रेट फॉर अनदर 2 minutes, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। somebody is joined with iPhone, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना वीडियो स्क्रीन ऑन कर लीजिए so that I can see and identify you। ओके, सो आज हम लोगों ने बहुत एक्सपर्ट्स को सुना है। There is one sister Richa Priya, there is one Manish Kumar, शायद वो लीव कर गए हैं, and BK Kanchan is there, Pratiksha sister is there. Anybody has any clarifications to be made on this subject which is has been discussed today, then kindly raise your questions. No. डॉक्टर एस के समंता ने तो बहुत अच्छा किया है, मेरे पास उनके लिए क्वेश्चंस नहीं है। कि लास्ट में चाहूंगा कि वेरी टॉपिकल, सुरेश चंद्र सिन्हा जी इज अ वेरी फोकस्ड पर्सन, और आपने ये मेनेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है, तो आपने बताया कि लगभग 40% का तो उठाव ही नहीं हो रहा है कचरे का,
और उसमें से भी प्रोसेसिंग बहुत थोड़ा हो रहा है। तो यू हैव बीन वर्किंग विद द म्युनिसिपल बॉडीज, तो आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या देखते हैं? हैज द गवर्नमेंट टेकन सफिशिएंट मेजर्स टू कर्ब दिस मेनेस कि ये पब्लिक का पार्टिसिपेशन का चैलेंज होने वाला है? सुरेश चंद्र सिन्हा साहब, आप थोड़ा सा 1 मिनट और बताइए कि ये जो कचरा प्रबंधन जो है ये अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा? द गवर्नमेंट, द म्युनिसिपल बॉडी और द पीपल और द म्युनिसिपल अथॉरिटीज? सर, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात करें तो कचरा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर्स की है। जो कचरा पैदा कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम निपटाएं। राइट। और म्युनिसिपल बॉडी जो है उसमें वो मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन प्राइमरी क्या हो रहा है कि हम सब हाथ दे रहे हैं म्युनिसिपल बॉडीज को, और इसीलिए हमारा म्युनिसिपल बॉडीज उस तरह से तैयार है नहीं। जितना अलार्मिंग बढ़ रहा है सिचुएशन, उस तरीके से वो तैयार हो नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने बायोडिग्रेडेबल के लिए सतत योजना लागू की है, जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायो सीएनजी में कन्वर्ट करके ये वेहिकुलर मूवमेंट में यूज हो रहा है। ये कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 5000 ऐसे प्लांट्स को बनाने के लिए ऑफर आमंत्रित किए हैं। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने बायो पॉलिसी डेवलप किया है, जिसमें यूपी का पॉलिसी जो है अभी सबसे बेस्ट है। और उन्होंने बहुत सारे छूट और बहुत सारी फैसिलिटीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां के लगाना चाहते हैं, उनके लिए दिया है। और जो टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। इवन अभी एनटीपीसी ने ब्रिकेट्स को एज ए कोल के साथ मिक्स करके यूज करने के लिए अपने इसके लिए किया है। और ब्रिकेट्स जितने भी हमारे सूखे पत्ते आते हैं, डेड ब्रांचेस निकलते हैं, उससे ब्रिकेट्स बन सकते हैं और ये वहां यूज होता है। उसी तरीके से अगर हम बायोगैस का प्रमोशन करते हैं तो ये हमारा 31 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रहा है हर एक साल, इसको हम ड्रास्टिकली चेक कर सकते हैं। इसको अगर सही तरीके से करें तो हम लेके 0 तक जा सकते हैं। तो ये है, अवेलेबल है। और अभी गवर्नमेंट का भी फोकस हुआ है। गवर्नमेंट ने गोवर्धन योजना लागू की है SPMG के अंदर में। उसी तरह से अर्बन एरिया में भी बायोगैस प्रमोशन की बात किए हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, और गवर्नमेंट के स्टेप्स भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। तो लोग का आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मस्ट है। तो थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? सर, बहुत ही आपने एप्ट रिस्पॉन्स दिया है कि only government and only authorities will not be able to take up the challenge of this pollution, water and soil pollution. We need people participation, and people and the government needs to work in sync so that we have a better cities. Like we had an example of Indore Municipal Corporation, which ranked the best city 6 times in a row, and that was only because of the government authorities roping up participation from people. Sir, I am delighted to tell you that at the fag end of this session, I am seeing have a great stalwart person who is also my inspiration. Akhori Maheshwar Prasad Sahab, retired IRS, and he is based at Patna, and we keep interacting on a daily basis. So I am happy he is among us and his video is on. So sir, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आज के इस गोष्ठी में डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान साहब हैं। राजयोगिनी रानी दीदी ने अपनी बात कह दी है। शी इज ब्लेस्ड दिस गैदरिंग, एंड बीके प्रतीक्षा is joined from Bhubaneswar. We have Dr. S.K. Samanta ji, associate professor of IIT Patna. He is also deliberated, and Sister Shruti Parman, and the last person who has just deliberated is Suresh Chandra Sinha ji. So sir, आप हमें थोड़ा सा एज अ पैटर्न ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट पैटर्न सर। तो ये अर्थ डे का जो हमारा आज का डेलिब्रेशन है, उसको सर एज अ पैट्रोनेज के रूप में सर आप हमें कुछ बताइए सर, सम योर एनलाइटनिंग थॉट्स ऑन दैट।
सर अनम्यूट, सर आपको अनम्यूट करना है, 1 मिनट। एक मिनट सर, आपको अनम्यूट करना है। सर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एग्जिट ही कर गए लगता है, एग्जिट ही कर गए सर। चंद्रेश्वर खान साहब आप भी अनम्यूट हो जाइए। सर आप भी अनम्यूट हो जाइए, या खान साहब अनम्यूट हो जाइए। जी सर एग्जिट कर गए लगता है, फौरी साहब एग्जिट कर गए हैं, गलती से एग्जिट कर गए हैं, और फौरी साहब गलती से एग्जिट कर गए हैं। ओके, तो इफ आई कैन वेट फॉर 1 or 2 minutes तो अच्छा होगा, बट आई डोंट फाइंड हिम ज्वाइनिंग रिजॉइनिंग वंस अगेन। तो it was a great occasion we have deliberated to render the vote of thanks. रिचा प्रिया co-host, आप थोड़ा सा आज जो सुनी है उसको लेके समाप्त करते हुए सभी हमारे गेस्ट को आप एक थैंक्स दे दीजिए। यू आर ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर। ओवर टू रिचा प्रिया फॉर डिलीवरिंग वोट ऑफ। सर आ गए हैं, अखौरी साहब हमारे बीच में आ गए हैं। सर आप अनम्यूट होकर कुछ बोलना चाहेंगे? लगता है उनको अनम्यूट करने के लिए बोलना पड़ेगा हमको फोन से। I'll just call him. Just hold. एक समय से just hold. I'll just ask him to unmute him. सर अनम्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हैं सर। सर अनम्यूट होकर के बात करें सर। थोड़ा सा सर हमारे 80 years old हैं, सो थोड़ा सा उनको दो इज कंप्यूटर savvy, बट कभी कभी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो I have waited. What do you say, sir? iPhone connecting. हाँ, ऑडियो हो गया, connecting to audio. Yes, sir. Now, sir. Yes. सर आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। I don't know what's wrong. What's wrong with him? Can I help him? The host is Pratiksha ji. Can you unmute him? जी भाई जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट करने के लिए, उन्हें वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Okay, I've just called him. Unmute दिखा भी रहा है उनका unmute दिखा भी रहा है। He's a very senior bureaucrat. He has been Director General of Narcotics Bureau of India. So, and he's very interested on all these activities. So, I would have loved to hear his views. Sir, आपका unmute नहीं हुआ, kindly unmute yourself, sir. Sir, unmute हो गया ये सर। हाँ जी, आप बोलिए सर। And you are not seen. फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सर आपको। Please join, sir. Please join and speak, sir. तब तक रिचा जी और प्रतीक्षा जी, if you have something to say, आप अपनी बात रखें। बीके कंचन दी, are you there? बीके कंचन दीदी, are you there? If you are there, kindly address us. No, she is not there. Okay. So Richa ji, now over to you. Kindly sum up
this thing and render your vote of thanks. Richa Priya. Yes, sir. Good evening, one and all. I'm very delighted to have joined the webinar, and it was a wonderful experience to listen all the stalwarts. I am very new to this subject, but I'm very aware of this fact that we need to focus on environment protection as we are heading to new century. As I know, nature, we borrow the nature from the future generation. रीचा जी, आप कहाँ अपना रिसर्च कर रही हैं? थोड़ा सा एक लाइन बता दीजिए. Sir, I am a PhD scholar from Patna University, Department of Philosophy, and my research is on happiness. Happiness. Yes, sir. Wonderful. Badly needed. And sir, today's webinar was very, very insightful. Dr. Samantha has come up with a great idea, which also tells us about humanity and character building. That is very important to work on any field whatsoever we are into. And basically, when I talk about happiness, I believe that there has to be some balance in the character of a person. And then and only then happiness will be achieved. It is a continuous process. As per Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit. So there should be, we must inculcate a habit of preserving the nature in a very small way. Also, we can participate in preserving the nature in at home. Also, we can just switch off our light while leaving the room, or we can just close the tap if it is not in use. Simple things are needed, and simple things will make a huge impact in the future. Planting trees, Samantha sir has focused on planting trees. It is a very important thing to do, and I believe that planting trees is very important, because one tree can, as per the report, I guess one tree can inhale a ton of carbon dioxide, and That's that true. is a great amount. Okay, so I think it's time to wind up. But before I do that, I still have Professor Anant Kumar here in the, as I can see. और आपको मैं बता दूं कि he is looking for some people who can do counseling, because आजकल students वगैरह को psychological problems बहुत हो रहे हैं. तो मैं समझ रहा हूं कि अर्थ का एनवायरनमेंट के साथ साथ मेंटल एनवायरनमेंट का भी बहुत काम है. तो सर, आज के डेट में ऋचा प्रिया जी हैं और सिस्टर प्रतीक्षा जी हैं, और थोड़ी देर पहले हमारे साथ श्रुति परमार भी थी और शायद अभी भी जुड़ी हुई हैं. या तो दीज पीपल आर द फैकल्टी हु कैन नो वर्क एज अ काउंसलर. तो थोड़ा सर, इन द लास्ट नोट सर, आप थोड़ा सा वो प्रपोजल जो गवर्नमेंट ने मांगा है रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द students working in engineering college वो शेयर कर दीजिए. Maybe Professor Dr. S.K. Samantha at IIT Patna would also like to listen to that. Sanjay bhai, I have already sent it to your WhatsApp. Please, I have already sent to your WhatsApp. Please open. Okay, sir. What do I need? And the background is All India Council for Technical Education, New Delhi, has made it mandatory to take service of counselors to just provide some help or assistance regarding mental problem or regarding psychological problem, because now the government has more focus on the stability, I mean mental, on the level of mental stability and physical stability, apart from teaching. Because now the survey has come that only 15% role is being played by your, I mean, bookish knowledge or whatever
education you are pursuing, 85% role is important for if you maintain your physical and mental health strong. That's why the government of India has started so many initiatives and programs and made it mandatory for all technical institutions to take services of, to engage services of counselor who can provide their support or guidance and mentoring to students whenever they need some psychological or emotional problem. That's why I have requested already Sanjay Bhai that if your organization can give this type of certificate so that it can be uploaded to the site of All India Council for Technical Education, and it will be, I think, once this practice comes, this practice is being started by your organization, All India Council for Technical Education can just replicate it at national level, that you see how Brahmakumaris Viswavidyalaya is rendering its support for giving, I mean, or to mentor or to give, to act as a counselor to not only students, but faculty members, non-faculty members, all. So that's why I have sent a message to your WhatsApp, Sanjay Bhai. If you go through that, it will understand its importance. Thank you again, sir, for it, because this was very important, because AICT is one organization which is directing all these technical institutions, and perhaps it has the horizon ranges to the entire country. Yes, so yes, I yes. wish the elite guests present on this platform to know that this is one of the ways in which we can be friendly to Mother Earth, because suicide rates in educational institutions is very high. Right, And right. yeah, so this is a very major challenges, and this is a burden on the earth, because we lose very important and very very learned persons and people who are very promising scientists and engineers. So this is a real good development, sir. Thank you very much, sir. Anybody would like to have a concluding note? Then we will just have 3 minutes to 9:30 and we will close. Samantha sir, आपने सुना, आपको कुछ कहना है sir? Yes, sir. Yes, sir. So only one line I want to add. For your kind information, IIT Patna took a very important initiative in the form of well-being of not only students, also the campus community, and the suicide rate is in IIT Patna is least among all the IITs. Wonderful. So that's a kind of achievement we have done, and I happen to be very fortunate that I took personal initiatives like these days people are very much scared. So yourdose.com was one of the online forum through which we also took service instead of not only physical counseling. So that online and offline combination worked really well for IIT Patna. This is just one I want to add that what IIT Patna did during last 7 years. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा ये जानकर सर कि पटना में ये situation is not that drastic compared to the bigger towns, and one of the reasons is that कि पटना में बीटा में is a huge campus, people have time to move around and they are more closer to nature. So thank you everyone for joining on this occasion of Earth Day. Sanjay ji, sir. Sanjay ji, just 1 minute to Dr. Anant Kumar. My mobile number is 92345 00315. Oh, sir, please let me write your mobile number, sir. Sir, please, can you repeat it? Sir. 92 345 345 00 315. This is my WhatsApp also. Just send me your number on this. I would also like to talk to you. Okay. Thank you. Sir is a great human resource faculty all over the place, and we take always inspirations from him. So thank you, sir. Since last 45 years, I'm in this field. So, जी. तो अखौरी सर फिर हमारे बीच दर्शन दे रहे हैं. हेलो सर, प्रणाम. और हम लोग अपना भाई मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ, आप हमारी बात पहुंच नहीं पाती है, म्यूट नहीं हो रहा है हमारा. क्या आप सुन रहे हैं हमारी बात? जी. अभी हमारी बात आ रही है? जी सुन आ रही है. अच्छा,
तो बस मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा आयोजन किया आपने। ये दुर्भाग्य रहा कि मैं इसको शुरू से मैं नहीं आ सका इसमें। सुबह 7 बजे मैंने ट्राई किया था, लेकिन उस समय नहीं मिला। फिर बाद में हमने देखा कि 7:30 बजे स्टार्ट होना था। उसके बाद somehow I missed it. I'm sorry for it. लेकिन एक अब पता नहीं 1-2 मिनट टाइम अगर है, I just want to share not the kind of things that must have been discussed, the curative aspects or the remedial aspects. I was just going through a book written by Rabindranath Tagore, and I liked some observation, and I wanted to share with you in case you have a little time. Sir. You have a little time? Sir. In brief, sir. Okay. So what I found was a wonderful claim by Tagore, saying that ours is the only civilization. The only civilization. There are multiple civilizations. We all know that. Some civilizations started in the West Asia. Others started in India and Egypt and also in North South America. But then none of the civilizations had the benefit of growing in jungles. All civilizations have grown in towns. All other civilizations other than ours has risen in the midst of towns and cities. Ours is the only one which grew up in forests. And that is what gave us the identity of being friendly with nature, not competing with nature, not exploiting the resources of nature, because we grew up making the trees, the natural, the natural entities as our best friends, and we grew up with making friends with animals, with insects, with trees, with leaves, everything. And that is what gave us the unique civilization we possessed. I don't know if this particular point was already mentioned because I was not a part of it, but then I felt very much touched by this observation. How true is this observation? That all civilizations of the world have grown up in cities. Greek civilization, Roman civilization, they all have grown up in cities. Ours is the only one which has grown up in forests, in jungle. And we should be proud of that. And that puts a special responsibility on us to protect the earth, which gave us this unique civilization. Thank you so much. Sir, that was a wonderful observation. And talking about civilization, the uncivilized people, जिसको हम लोग बोलते हैं सर, जो कि आदि मानव लोग होते हैं, वो लोग तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, and they are quite healthy and they are nature preservers. जो आदि मानव हैं, जो जिसको कहते हैं aboriginal people, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हैं, तो they are very close to nature. लेकिन आपने बहुत रिमार्केबल बात की कि जो लोग सिटीज में जो बसे हैं, उसमें इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जो सिटी जो नेचर के अमिस्ट में रह करके नेचर को रेस्पेक्ट और रिवियर करते हुए, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट वर्शिप करते हुए भी काम किया है. सो सर, ये बहुत ही अच्छी बात है. यू कोटेड रविंद्रनाथ टैगोर. ये बहुत ही लास्ट अच्छा बहुत कोट आपने दिया है. मैं एक बात केवल ऐड करता हूं, सिर्फ इसलिए कि आदि मानव की बात मैं नहीं कर रहा था. मैं सिर्फ जितने भी सिविलाइजेशंस हैं वो करीब 5000 वर्ष से 4000 वर्ष के बीच में ही सिविलाइजेशंस ग्रो किया है, सिर्फ 5000 वर्ष से. सो आदि मानव की बात इसलिए हमने नहीं की कि उस सिविलाइजेशन से नहीं जुड़े हैं. वो सिविलाइजेशन से जुड़े हैं हम 5000 वर्ष से ही, इसलिए. लेकिन 5000 से वर्ष से ही हम लोग यूनिक पोजीशन है, ये तो प्राउड होने की बात है, इसलिए मैंने शेयर किया. दैट्स ऑल. ग्रेट ऑब्जर्वेशन सर. और बहुत अच्छा लगा सर, आपने लास्ट में आकर के हमें और एकदम एनर्जाइज कर दिया.
और Thank you, thank you. We are very thankful to you, sir, for your last important comments. बहुत अच्छा लगा, sir. We at this hosting this Earth Day has been very fruitful, and I again like to thank Dr. Anand Kumar, Joint Director, Science and Technology Department, Dr. S.K. Samanta ji, Associate Professor, IIT Patna, Sri Chandreshwar Khan, Professor Chandreshwar Khan Sahab, Senior AGM Tata, and Richa Priya and Shruti Parmar, and not least and not less Suresh Chandra Sinha ji, and all people who had joined and left. So it was a really fruitful discussion. मेरे ख्याल से YouTube पर भी उपलब्ध होगा, तो हम आपको शेयर कर देंगे. आप सभी इस चीज को जो deliberations है उसको अपने groups and circles में शेयर कर पाएंगे, so that बहुत सारे लोगों का benefit होगा. With that note, I say good night and welcome to the new beginning, जो हम लोग कल से करने वाले हैं नेचर कंजर्वेशन का. और हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे एनवायरमेंट डे पर, सर, और उस दिन हम लोग और एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, और जो लोग आज हैं वो जरूर रहेंगे, सर. दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सर. गुड नाइट. ओम शांति. थैंक यू संजय भाई. गुड नाइट. थैंक यू, सर. ओम शांति. गुड नाइट, सर. ओम शांति. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने ज्वाइन किया. मैं लास्ट में एक मेडिटेशन वीडियो 3 मिनट्स का मैं शेयर कर रही हूँ. आप सब प्लीज उस वीडियो को सुने और हमारे जो प्रकृति माँ को वाइब्रेशंस दे अपना. मैं भी लास्ट में 3 मिनट का मेडिटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ. और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं इन्हीं मैडम का दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमें लिंक शेयर किया है. थैंक यू मैम. आप चलाइए प्लीज. थैंक यू. Just sitting quietly, comfortably, I'll share a few thoughts and invite you to follow these ideas. Going within and coming to the awareness of the light that I am, the inner being, the light shining in the center of the forehead. Connecting with myself, there is peace. And in this awareness, I connect with the divine. And as I do so, the source of light, of love, of purity, of joy, showers all these qualities on each and every one of us. And these qualities reach out beyond the human family to the bigger family, all forms of life. And these qualities reach out to the entire web of life, nature itself, the purity, the peace, the love, truth, and joy. Permeate throughout the human family, all other species, and nature. And the restorative energy, the regenerative energy is at work. And harmony is created once more. I hold this vision and I keep connecting with this
again and again. Om Shanti. Thank you. आप ऑडिबल नहीं है संजय भाई? That was Sister Jayanti ji, Director of European Center of the Brahmakumaris, and she is one of the delegates at United Nations Environment Program. So she has conducted the meditation. और अब बोलने के लिए कुछ बोलेंगे तो और environment अब अशांति की ओर जाएगा. So with these very peaceful notes, we should leave this today's session. और शांति से अर्थ के लिए pray करते हुए लास्ट में, when we go to bed, we should pray for 5 minutes for the betterment of earth. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much.